Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Shivangni Srivastava, Design and Project Management from TAG. Today, I'll be speaking on what is hybrid learning. Our vision and mission here is learning without limits and learning for life. I will start by quoting Duane Elgin. We are the first generation of global citizens. The choices we make will establish an overall thrust to living with which humanity will live for generations. Before we move forward with the session on hybrid learning, I have a few questions for us to reflect and reimagine upon. These questions are: what knowledge, skills, and attributes do our students need to thrive in this complex world? What kind of learning is needed for this current and future complexity? How do we ensure equity among students? How do we attend to well-being of students? What have we learned from remote learning? And how technology can be best leveraged for learning in the future? So by the end of the session, you will have appropriate information on hybrid learning, and most of these questions will be answered for you. So what is hybrid learning? Hybrid learning is a blend of synchronous, asynchronous, physical, and virtual learning. Here, our intention is to create profoundly personalized and learner-centered experiences. There are four pillars which form the basis of hybrid learning, and these are the environment, pedagogies that are adopted while knowledge transaction, the partnerships, and effective use of digital devices. So I'll be explaining these four pillars in detail. The first one is environment, which includes the optimized usage of what resources we have to develop a digital connected learning community system. Digital teaching and learning platform can make your institution completely lockdown proof. In pedagogy, we have a specific one, which is known as Gen Extramuros, and it means knowledge beyond walls. With support of class managers, your physical classrooms can be converted into a hybrid classroom, which is very much need of the hour. In partnership, we have training on digital literacy, and we ensure digital and cyber security along with implementation of experiential learning with virtual field trips. When it comes to digital devices, our focus is to provide devices for both teachers as well as students and a large cloud storage with robust hardware. So there are 7 key trends that are transforming education right now, and they help us to shift from industrial age to knowledge age. Any educational institution such as yours will have to adopt these 7 key trends in order to transform completely and become a knowledge age compliant institution. These 7 key trends are urgency to drive change, digital content revolution, doing more with less, personalization, innovative teaching, employability, and 21st century skills. So the first one is urgency to drive change. And as the name suggests, we know that with onset of fourth industrial revolution, which is the digital revolution, everything around us is getting digitalized, ranging from products to services. So our education system as well has to make a shift from industrial age to knowledge age, and this can be made possible with the help of technology. Hence, training on digital literacy is very crucial these days. In support of that comes digital content revolution, and we acknowledge that every student has a different learning style. Some prefer learning from visual cues, some prefer verbal cues, some by reading, and some by hands-on experience, which is by doing. So with the help of technology, we can affordably tailor these information as per students' need. And there are various ways to do this by multiple media integration. There will be much more flexibility of usage and stronger connectivity among students and other stakeholders of the institution. Doing more with less has to do with the digital devices. And here, with the help of digital devices, we can replace the need of carrying books and notebooks to the classes. There would be cloud storage provided to store all the learning material, and it makes it really easily accessible for students and professors to extract the files that they're looking for. It also helps in asynchronous learning where students, since they have devices at their homes, they can learn things at their own pace even when the professors and teachers are not conducting a class. Also, physical labs at schools can be converted into a digital lab, and it can be used for multiple purposes depending upon the need of the subject. Then comes personalization. With technology, we can customize learning for each and every student as per their interest and needs.
And this can be done with the help of adaptive learning, artificial intelligence, robots, analytical engines, and insights, because they provide us with reports based on usage behavior of students and their interactivity with the learning material that is being provided to them. So students and teachers would get to know which subject or which chapter they need to focus on more as compared to others. And this can also enhance their performance in class. In innovative teaching, there is an idea called Gen Extramuros pedagogy, which means knowledge beyond walls. And it has the concept of five class managers. These are presenter, collaborator, engagement specialist, content manager, and digital coordinator. So it depends on professors whether they want to play one role or multiple, depending upon the resources that they have at their disposal and the capacity of class students they are dealing with. There are also certain digital aids which can help in innovative teaching, such as adaptive learning and testing, robotics, coding, and cognitive learning, and others which I have already presented in previous slide. So the most important digital aid here is virtual field trips and experiential learning, because they give an exposure to students outside their classroom and they can learn certain concepts. The last but not the least is employability, and here our goal is to create holistic and well rounded individuals. Our National Education Policy 2020 talks about increased flexibility in choosing subjects and importance of digital literacy. So, when a student graduates from school or college, they will be well equipped with 21st century skills that are creativity, critical thinking, communication, collaboration, and computational thinking. These skills are exponentially increasing the chances of getting employed. Now, these are going to be implemented in your schools. So we hope you would adapt to this in your educational institution, making it completely future ready and lockdown proof. Now, I hand over the stage to Mr. Ali Seth to talk about implementation of hybrid learning. Over to you, sir. Thank you, Shivangani. Thank you very much. Well, today is a parents orientation program, and it's a very important program because parents need to know what's going to happen in the schools in the future. And with me, I have got my colleague Prashant Jha, who's going to do, we're going to do a bilingual presentation. I'm going to do it in English, and he's going to do it in Hindi. Now, let me just share my screen and start the presentation. Well, we are talking about digital transformation and hybrid learning. And it is a very important process that is taking place across the world. If you see the digital transformation that had taken place in various segments, first it was a telecom segment in India, then was a banking segment and various other segments, but I'm giving you just the landmark segments. And now it's going to be the education segment. And whenever there is whichever segment is supported by the government, the digital transformation means a lot. Now, along with digital transformation, there's hybrid learning, because today we do not want to get stuck in just the four walls of the classroom for our learning processes. We want to be anywhere, any place, on any device for learning. Well, Shivangani has mentioned the 7 trends and how these trends are going to be effective, and she explained it detailed to us. But the very fact that I'm putting this slide and just showing you this entire thing, like the urgency to drive the change and digital content revolution and things like that, is because this is very meaningful. As she said, when we are moving away from the industrial age, getting into the knowledge age, the teaching processes should change. And what are the different steps we should include in the teaching processes, which will make the change for the new generation of workforce. Now I go over to Prashant and he'll explain the same thing in Hindi to you. Over to you, Prashant. Thank you so much, sir. And once again, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. मेरा नाम प्रशांत है
और आज का सेशन हम लोग मल्टीलिंगुअल करने वाले हैं, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी को यूज करके हम लोग आज की डेट में आपको पूरा प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि कंप्लीट कंसेप्ट क्या है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कार्ट ब्लांच। एंड आज का जो सेशन है वो उसके बारे में बात किया जाता है डिजिटल परिवर्तन के बारे में, जो कि एजुकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नाउ, जैसा कि सर ने भी एग्जांपल दिया टेलीकॉम इंडस्ट्री, सर ने एग्जांपल दिया बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटली हो चुके हैं और काफी अच्छे तरीके से इनमें डिजिटल चीजें यूज हो रही है। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हो टेलीकॉम इंडस्ट्री में, आज के डेट में, पहले के जमाने में मोबाइल फोन काफी कम यूज हुआ करती थी। आज के डेट में सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। काफी अच्छा एग्जाम्पल रहा टेलीकॉम इंडस्ट्री। इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा रोल प्ले करती है इस सारे चीज में। और बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जैसे कि आपने देखा है, पहले के जमाने में हम लोग को बैंक जाना पड़ता था कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए, बट आज के डेट में सारा कुछ, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ आप मोबाइल में ही कर सकते हो। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में भी काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। केवल ये दोनों इंडस्ट्रीज नहीं, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बंद होने पे आ गई थी, जिसमें कि पहले के जमाने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बिफोर कोविड हुआ यह था कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होते थे, जैसे कि बीएमडब्ल्यू व्हीकल हो गया, फिर आपका बेंज हो गया, ये मर्सिडीज हो गए, ये सारे के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रॉब्लम काफी होती थी क्योंकि मैक्सिमम लेबर्स का यूज हुआ करता था और एक यूनिट को डेवलप करने में और रेडी करने में ऑलमोस्ट 500 वर्कर्स का यूज किया जाता था। लेकिन अब जाके कोविड के टाइम पे जब लेबर्स की कमी हुई, तो इंडस्ट्री ने समझा कि इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी जरूरत है, और उन्होंने कंप्लीटली एक न्यू रेवोल्यूशन लेके आया, वहां पे रोबोट्स को यूज किया। अब रोबोट्स होने से क्या हुआ कि जो काम 20 दिन का काम था वो एक ही दिन में हो जाता है, और हर आधे घंटे में एक एक यूनिट रेडी हो जाती है असेंबल होके। इसके सारे वीडियोस भी इंटरनेट पे हमें मिल जाएंगे, जिससे कि ये पता चलता है कि किस तरह से एजुकेशन, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जिस तरह की सारी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसी तरह हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन सेगमेंट को भी ट्रांसफॉर्म होने की काफी जरूरत है। और इट्स और इसका सबसे ज्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो अभी काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होना, और जिससे कि हमें लर्निंग कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी डिवाइस पे प्राप्त हो सकती है। और जैसा कि सर ने बताया, शिवांगी ने बताया अपने प्रेजेंटेशन में, 7 की ट्रेंड्स जो आज के डेट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में चल रही है, वो आपको स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही है। ये 7 की ट्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है इन सब सारे चेंजेस के लिए। और आपने ऑलरेडी देखा है कि आज की डेट में पर्सनल लर्निंग्स, बच्चों को खुद से पढ़ाई करना, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए लेके जाना, 21st सेंचुरी स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस में आज के डेट में काम करना, सो स्कूलों में जैसे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक पढ़ाई जाती है, आज के डेट में 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। तो ये 7 की ट्रेंड्स को भी हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से ये सारे ट्रेंड्स चल रही है, और हम लोग यही सारे ट्रेंड्स को इस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं। और ये सब आपके टीचर, आपके स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अप टू डेट रहेंगे। यू विल बी ऑल्सो गोइंग विथ द ट्रेंड्स। नाउ गिविंग द स्टेज बैक टू अली सर फॉर नेक्स्ट स्टेज। Thank you, Prashant. Well, I would like to talk to you about NEP 2020, because NEP 2020 is a very important process which was brought into education, because our education was directed towards the industrial age. Now, with NEP 2020 coming in, it is directed towards towards the knowledge age. Now, supposing you want to look a closer look at this NEP 2020, what all it does. It has curriculum changes, pedagogical changes, assessments, and student supports are the fundamental requirements for quality learning. Quality learning, infrastructure, resources, technology are necessary for high quality education. Now, supposing we just dwell on this one more time, what it's saying is
going to be a complete change in education here. That means the way we were learning earlier and way we are going to learn in the future are two separate things. So now your children are stuck in the crossroads. Well, because everybody who's teaching them are coming from the industrial age teaching learning system, and where they are going towards is the knowledge age learning system. Therefore, we have to be very careful about this. How we're going to teach our children, what we're going to do with our children, because anything we do wrong, it'll affect their future, it'll affect their careers. Therefore, what we should have is we should have the right way of giving them education. That means the right processes should be employed. Means when we say pedagogy, what does pedagogy mean? Pedagogy means the way we teach a student. Earlier, it was a chalk and talk methodology. A teacher would come into the school, into the classroom, will open a textbook and start talking to the students and start writing on the board. Today, it's not the process. Today, the process is going to be totally different. Today, it's more personalized learning and more adaptive learning. So the students have a say in how they want to learn. So how are we going to manage that? So all these things are scripted in NEP 2020, and which is a very, very important document. And we need to see that this document is adopted and taken forward in our education system. Over to you, Prashant. जैसा कि सर ने बताया, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मानी गई है, और इस डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कंडीशंस, जितने भी क्लॉज दिए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे अच्छा ये बताया गया है करिकुलम, पेडागोजी, करिकुलम का पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन और छात्र सहायता, गुणवत्ता सीखने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से एजुकेशन में यूज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज किया जा सकता है, और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये सारे बातें एनईपी में बताई गई है। और इसी से हम लोग इसी से इनपुट लेके ये पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, और ओवरऑल बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग रेफर करके एक स्कूल में जहां पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगी, वहां पे इसके सारे क्लॉज को काफी अच्छे तरीके से टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ में इंप्लीमेंट किया जाए। और ओवर टू यू सर। Thank you, Prashant. Now, to implement NEP 2020, we require to go into hybrid learning. Now, hybrid learning model combines the best of in-classroom and remote learning with digital engagement. It is more than a quick fix. It is a way to enhance and accelerate learning by providing student-centric approach to meet the demands of a diverse learner's needs. Now, suppose you look at the statement, it is power pack statement. Now it has got in classroom and remote. Now let's say a student today cannot go to school. Now what happens? He misses a class. The parents are running to the friends' houses to check what's the homework been given, what's been taught in the classes. All those things we do not know because the other students are going to tell us who attended the class. But here it doesn't happen. It is not the case. Here what happens is the student is in the class or outside the class, they can still learn. Let's say a student is not well, he's having fever or she's having fever or a long leave or something like that, or traveling for that matter, but still they can be a part of the classroom. Then it is digital engagement. Now, for instance, when we do a hybrid learning, there's a lot of digital engagement.
there is going to be a collaborative method wherein when the lesson plan is going to be is thought, the students can ask questions to the teachers, and teachers will reply back those questions. And there'll be engagement wherein the teacher will ask the questions and students have to reply back on those questions. And they will come to know the knowledge index of a student. And plus, the students can the approach how the student wants to learn, whether they can see and learn, hear and learn, or read and learn. All those methods are available in this particular methodology. So therefore, hybrid learning is just not remote learning that you are sitting outside the class and you're trying to learn from a teacher who's remote. No, it is not like that. There's lots of changes in hybrid learning. It's a new format of learning, and this is what is going to be implemented in your schools going forward. Over to you, Prashant. Yes, so जैसा कि सर ने बताया, हाइब्रिड लर्निंग एक न्यू फॉर्मेट ऑफ लर्निंग है, और ये लर्निंग के बारे में काफी ज्यादा मिथ्स भी है कि ये कंप्लीटली ऑनलाइन लर्निंग होती है, ये कंप्लीटली या तो सब कुछ ऑनलाइन होता है इसमें। नाउ होती क्या है हाइब्रिड लर्निंग, आई जस्ट एक्सप्लेन यू कंप्लीटली। नाउ जैसा कि सर ने बताया अभी आपको हाइब्रिड लर्निंग के बारे में, आपके कोविड से पहले और जब लॉकडाउन से पहले अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों का क्लासरूम्स, उसमें वो क्या करते थे कि वो डायरेक्टली स्कूल जाते थे और स्कूल में पढ़ाई होती थी, टीचर उनको पढ़ाते थे। अब हर बच्चे का नीड्स डिफरेंट है, हर बच्चे का नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, पढ़ने की क्षमता, सब कुछ डिफरेंट है। और जब कोविड के टाइम आया तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में उनको मोबाइल्स पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हेल्प से पढ़ाया जाता था। उसमें भी आप देखोगे कि डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग था, बच्चे उसमें भी ऑनलाइन टाइम पे आते थे ऑनलाइन, और ऑनलाइन वीडियो फेस में आके वो पढ़ाई करते थे। अब ये दो टाइप के लर्निंग मॉडल में अगर हम लोग समझे कि क्या एग्जैक्टली इसमें एडवांटेज है, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस है, राइट? तो हाइब्रिड लर्निंग क्या करता है, ये दो मॉडल क्या ही नहीं, बाकी और भी मॉडल्स, फ्लिप लर्निंग, रोटेशनल मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स में जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसको कंबाइन करके ये मॉडल बनाया जाता है, जिसमें कि डिजिटल एंगेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और बच्चों का जो आपका मतलब उनका जो पढ़ने का ये होता है वो कंप्लीटली उनका पर्सनलाइज एजुकेशन हो जाता है। नाउ हाइब्रिड लर्निंग में मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। इसमें बच्चे घर बैठे, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो स्कूल आते हैं तो स्कूल में आके भी वो रेगुलर टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, और हर सेशन, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इस सेशंस का, कि एवरी सेशंस आर गेटिंग रिकॉर्डेड, जो कि फिजिकल क्लासरूम के टाइम पे रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी हमारे पास। बच्चे स्कूल से घर गए, मे बी चैप्टर्स वो मिस आउट कर गए, या फिर स्कूल नहीं आ पाए, जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया था। बट हाइब्रिड में क्या होता है कि सारा सेशंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होता है, बच्चों से रियल टाइम में असेसमेंट्स होता है, जब क्लास कंप्लीट हुआ, टॉपिक खत्म हुआ, उसी समय उसका आंसर्स, क्वेश्चंस, असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों को वेट नहीं करना पड़ता है कि मिड टर्म टेस्ट आएगा या फिर यूनिट टेस्ट आएगा, उनको उसी समय उनका डाउट्स क्लैरिफिकेशन हो जाता है। डिजिटल एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट होता है बच्चों को लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के हेल्प से, और बच्चे का लर्निंग काफी, नॉलेज काफी, कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होता है इस लर्निंग मेथड में, और इसमें सारे मॉडल्स के बेस्ट स्ट्रेटजीज को यूज किए गए। तो always it is advantage model for future of education. It is going to be a new norm. So this is the definition of hybrid learning. Now we are going to the next slide. Well, a hybrid learning is not only taught from a classroom. It has got studios. From the studios, it's peer learning, and multiple teachers teach in a hybrid learning platform. That is, one teacher could be a presenter, the other teacher could be an engager, one could be a collaborator, one could be a content specialist, one could be a tech specialist, one could be a mentor. All these teachers put together teach the students. All right. Now here what happens is we have got studios from where the lectures are sent, and it is it just happens now. For instance, when we are having this hybrid learning, it might not just get into one school.
it could be multiple schools who can benefit out of the same hybrid learning platform. That means a student from down in Bangalore and Delhi and Bombay and Calcutta can learn from the same students. So therefore, there's going to be a lot of flexibility, and students will learn together. Here, what happens in the regular situation is your class is as good as a teacher who's going into the class. Suppose a teacher is not well, not teaching well, that time the students would suffer. But here what happens is when the classrooms, in every class there's a teacher, and plus there's a studio teachers and presenters and various kind of things. The best of the best teachers are teaching the students. Therefore, the education also is of a high quality. Over to you, Prashant. Yes. So जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये स्टूडियो का जो इमेज है, ये कंप्लीटली हाइब्रिड लर्निंग के बेनिफिट्स डिफाइन करने के लिए काफी होती है. अब अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये भी एक वन वे ऑफ हाइब्रिड लर्निंग है. इसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्लासरूम के सिचुएशन में अगर मैं बात करूं फिजिकल मेथड ऑफ टीचिंग, जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो मे बी सारे बच्चों का डाउट्स क्लासरूम में क्लियर नहीं हो पाता, या बच्चे जब ऑनलाइन क्लास में जब ज्वाइन करते हैं टीचर के साथ में, तो उनको लगता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो मे बी उनका डाउट्स क्लियर ना हो पाए, बिकॉज टीचर केवल एक ओनली वन टीचर है जो पढ़ा रहे हैं. वो अपना स्क्रीन दिखा के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उस समय क्या क्या डाउट होती है उसको किस तरह से टीचर उसको नॉर्मल ऑनलाइन क्लास में हैंडल नहीं किया सकता. तो कंसेप्ट आया हाइब्रिड क्लासरूम का, और ये जो आप सेटअप देख पा रहे हो ये हाइब्रिड क्लासरूम का सेटअप है. इसमें क्या होता है कि एक क्लासरूम को मैनेज करने के लिए 5 टीचर्स से ज्यादा के लोग का टीम यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पहला टीचर होते हैं जो कि स्टूडियो टीचर कहते हैं, जिसको हम लोग और कहते हैं प्रेजेंटर, जो कि प्रेजेंटेशन हाई क्वालिटी कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 3D रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और काफी कुछ 3D वे में बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है. और भी काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और वीडियोस के हेल्प से टीचर क्या करती है, स्टूडियो से कंसेप्ट बच्चों को क्लियर कर देती है. बच्चों को उस समय अगर डाउट है तो वो उस समय इमीडिएटली डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अगर वो सेशन के बीच में अगर वो चैट से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय हमारे और स्टूडियो में टीचर होते हैं जो कि उनका डाउट्स इमीडिएटली क्लैरिफाई कर देते हैं. एआई के हेल्प से भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन होता है और टीचर्स के हेल्प से भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन होता है. इंगेजमेंट भी टीम उसी सेटअप में होती है. इंगेजमेंट टीम का काम ये होता है कि अगर मेन प्रेजेंटर ने एक छोटा सा कंसेप्ट बच्चों को समझाया, ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, अगर इंगेजमेंट टीम चाहती है तो एक छोटा सा क्विज लेके देख सकती है. तो एक क्लासरूम के टाइम में फुल टाइम इंगेजमेंट ऑलवेज होता रहता है. लाइकवाइज कंटेंट की भी एक टीम होती है. अगर मान के चलिए कि अगर वो टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर ने कुछ कंसेप्ट बताया बट वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते समय बच्चों को समझ में नहीं आया, तो क्या होता है कि जो कंटेंट टीम होती है उनको लगता है कि बच्चों का रिक्वायरमेंट में भी ऐसा है कि वो एक वीडियो क्लिप देखेंगे तो ये कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे. तो कंटेंट टीम क्या करती है, एक छोटा सा वीडियो को सेशन के बीच में विद कोऑर्डिनेशन वो वीडियो को प्ले कर देती है. तो बच्चों का जो डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि वो रियल टाइम मल्टीपल जगह से कंटेंट जो वो चाहते हैं, जो उनका डिमांड है उस हिसाब से सेशन में मिल जाता है उनको. लाइकवाइज एक आईटी डिपार्टमेंट के भी लोग होते हैं जिनका ये काम होता है बेसिकली कि किसी का अगर प्रॉब्लम ऑनलाइन सेशन के टाइम में हो रहा है या कुछ कनेक्शंस का प्रॉब्लम हुआ है, तो एक टीम ऐसी होती है ये जो कि आईटी का काम सारे स्कूल्स में देख लेती है. तो ये सारे टीम मिलके एक कंप्लीट क्लासरूम मैनेजर बनते हैं स्टूडियो में. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका होता है मेंटर टीचर, जो कि फिजिकली स्कूल में अवेलेबल होता है, जिनका काम ये होता है कि टीचिंग के बाद में जो स्पेसिफिक टाइम टीचिंग के बाद में वो टीचर क्या करते हैं कि बच्चों का जो रियल टाइम फेस टू फेस डाउट्स है बच्चों का, उनके साथ और टाइम स्पेंड करते हैं वो, और उनका डाउट, उनको एक्टिविटी, उनको प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल चीज करने में उनको एज ए मेंटर साथ देते हैं. तो ये सब का एक टीम होता है जो कि एक हाइब्रिड लर्निंग को स्टूडियो को कंप्लीटली ऑपरेट करता है. दिस इज हाउ द सेटअप्स लुक लाइक. ओवर टू यू सर. Well, a modern infrastructure in learning. Okay, what is this infrastructure in learning? Hybrid learning, as we are talking to you, digital literacy program,
because we need to understand what the digital literacy is all about, because we are using so much of, see, when we started education system, it was a Gurukul system or a philosophical system. There you didn't require any infrastructure. But as we went along, we invented the four walls of the classroom. There the infrastructure was brick and mortar. And today we require the infrastructure, we require a digital infrastructure. For digital infrastructure, need to understand digital literacy. Not only that, not only for education purposes, everything around us is digital. Therefore, the students needs to understand what is digitalization and what is digital, and they need to be digitally literate. So that is very important. Then Skill Hub initiative. Now, India is just emerging in its skills because it's between 25% to 50% are skilled. Rest of the people are not skilled. But if you see, I mean, in Europe and other places, people are skilled from 75 to 100% of their population is skilled. Therefore, they are employment ready, they're job ready. So that is very important. So therefore, we need to have the Skill Hub program put into schools, and that should be done through the industry. So that's what we are doing. We are bringing in industry to help in training the students in real-time jobs, in real-time skills rather. Then financial digital literacy program. Now, India, you know that it has gone, the financial digital digitalization started long time back in India, maybe 2 decades back in India. And now we are a very mature kind of economy in terms of digital transactions, financial digital transactions. Like we have got card payments, we have got UPI payments, and today India is the only country which has got a digital currency. Therefore, our children need to know about these things and need to know the other side of it. That is the cyber security, what will happen supposing they misuse this particular platform, the financial literacy, digital financial platform. If they misuse, what would happen? Therefore, we need to explain to them, and they need to understand this thing thoroughly. Therefore, that has to be taught in the school. Then the school and college connect. Many of our children suffer after the school. They are suffering to understand to which college they will join, because there's a lot of gap between the school and the college. I have seen so many schools which are belonging to the same group as the colleges, but they still do not know what their sister colleges are teaching. Therefore, what is required is we require a lot of explanation from the college to the school students, so that they understand what courses are offered, what's their future careers can be, what kind of a thing, what interests them, and then they can go for these courses. Otherwise, what happens is it's just a rat race as far as we are concerned. The moment you finish your 11th standard, the students are getting into coaching classes to do some kind of competitive examinations. But that's not enough, because you only got those limited states in the competitive examinations and the courses and the colleges. Beyond that, you will not have those seats. What happens to other students? They become depressed. They feel failures. That's not the right thing to happen. Therefore, we are connecting the colleges to the schools so that the colleges can come and do a lot of explanation about their courses, do a lot of counseling to the students and the parents, so that they will understand what is in store for them and what interests them. The next is the Art Connect program. The Art Connect program is a beautiful program. Ek Bharat Shesh Bharat program. Anyway, when you go further, we'll explain the whole program to you. Then the virtual field trips. Now, a student can be sitting in one place and could be asking themselves how is ISRO looking inside, or how NASA looks inside, or how Alaska looks, or can I talk to somebody there? But we do not have, in a physical classroom, we do not have that facility. Therefore, here in the virtual trip,
A student can go on a virtual trip. The experts are there on the other side, and they can explain to the students all the different aspects of whether it's an industry, whether it's a landscape, whether it's manufacturing, or whatever it may be. But the student can understand from the expert's point of view. Then we have got adolescence health program. Well, adolescence health program is very important facet of our teaching process, because without having a good health program, a school will not be able to move forward. First of all, we need to understand of whether our students have got some physical deficiencies, mental problems, and we need to counsel our students so that they come above these things and they become normal and they can be healthy individuals. Well, as we go along, we'll explain that also. But over to you, Prashant. You can explain this to them. Yes. So सर ने जैसा कि अभी अब जस्ट एक्सप्लेन किया, ये सारे प्रोग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है किसी स्कूल को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के लिए. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कार्ट ब्लंच प्रोजेक्ट के अंदर में रेगुलर एजुकेशन के साथ में अभी आपके स्टूडेंट्स को ये सारे प्रोग्राम्स कंप्लीटली अवेलेबल हो जाए. जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाइब्रिड लर्निंग स्पेस का सर ने बात की, ये आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये स्पेस एक स्कूल में होना ही चाहिए. क्योंकि जिस सर ने एग्जांपल दिया था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हम लोग सभी ने सुना है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको पता था कि एक ओवरऑल स्किल्स बच्चों को दिया जाता था, नॉट ओनली ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बट एक सारा का सारा ओवरऑल स्किल दिया जाता. फिर एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, 4 वॉल ऑफ क्लासरूम में बच्चों को बैठा दिया गया और एज ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया गया. फिर क्या हुआ कि पेरेंट्स को बेसिकली गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल. थोड़ा सा स्किल्स की भी बारे में जानकारी उनको मिलना डिफिकल्ट हो गया. बट जैसे ही रेवोल्यूशंस आना शुरू हुआ और यू हैव सीन दैट कि द कंप्लीट इंटरनेट सिचुएशन हैज कम इन इंडिया and the world, the situations of the classrooms are changing today. But everybody has to follow a uniform transformation system, which is well researched. तो अभी क्या है कि कनेक्टेड लर्निंग कम्युनिटी का सिस्टम है और उसमें हाइब्रिड लर्निंग स्पेस होना चाहिए, जिसमें कि लर्निंग कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम. और जो एडवांटेजेस हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को मिलती थी, वो एजुकेशन के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन सिस्टम में और 4 वॉल ऑफ क्लासरूम बच्चों को मिलती है, सभी चीज को ब्लेंड करके हाइब्रिड मॉडल में हम लोग एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्लासरूम्स में लाके दे रहे हैं बच्चों, जिसमें क्लासरूम इज नॉट ए बाउंड्री. बच्चों को जो सीखना है, जो बनना है, वो सारे कुछ वो क्लासरूम्स में रह के सीख सकते हैं. तो जो स्टूडियो का सेटअप आपको दिखाया हमने, जो क्लासरूम का सेटअप दिखाया, दिस इज हाउ द सेटअप्स विल बी डन इन द स्कूल वेयर द hybrid learning teaching process can start. Now for other programs, जैसे कि आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें कि एक्सप्लेन किया जाता है कि बच्चों को और टीचर्स को भी कि कैसे वो डिजिटली लिटरेट हो जाए, ताकि वो मैक्सिमम चीजों को स्किल्स की तरह यूज कर पाए, डिजिटल चीजों को. जैसे कि एग्जांपल आज की डेट में कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्कूल में पढ़ाया जाता है, समथिंग लाइक सब्जेक्ट्स लाइक what is computer, what is keyboard, what is mouse, what is hardware, what is software. But क्या हम उसका प्रैक्टिकली बच्चों को आज के डेट में बताते हैं कि इसका आपको एम्प्लॉयबिलिटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला आ सकता है, कैसे आप इसको यूज करके अपना कैरियर भी बना सकते हो, कैसे इसको एज ए स्किल ले सकते हो आप, जिसमें कि आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में आप ये सब चीज सीख के एक स्किल अपने अंदर में ले सकते हो, ताकि आप फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए रेडी हो जाओ. तो जो भी आप सीख रहे हो उसको अगर आप डिजिटली सीख के और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और यूज केस समझ जाते हो, तो वो चीज आपसे कनेक्ट हो जाता है, जो कि इस कंप्लीट करिकुलम में बताया जाता है. और इसको करवा के बच्चों को मिलेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेशन के लिए उनको एलिजिबल बना दिया जाता है. उनको जैसे कि सर ने बताया, अभी हमारे 80% ऑफ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि जो स्कोर कार्ड्स होते हैं उससे इंपॉर्टेंट स्किल कार्ड है.
और काफी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में स्किल्स हो। और इस प्रोजेक्ट में जो लिस्ट आउट स्किल्स सीबीएसई के द्वारा किए गए हैं, वो सारे स्किल्स को हम लोग इंडस्ट्री लीडर्स के कनेक्ट करके और ये स्किल्स के को बच्चों तक पहुंचाएंगे, ताकि बच्चे अगर अगर एग्जांपल दे रहे हैं, अगर बच्चे को ब्यूटी एंड वेलनेस पे कोर्स करना है तो वो डायरेक्टली ब्यूटी एंड वेलनेस के टॉप इंडस्ट्री लीडर के थ्रू वो सेशंस ले सकते हैं। वो सेशंस टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ऑनलाइन आ सकते हैं क्लास में और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हाउ टू चूज अ फील्ड इन दिस एंड हाउ टू मेक दिस फील्ड एज योर हॉबीज, हाउ इजी इट इज, हाउ इट विल हेल्प यू इन योर स्किलिंग। तो ये सारी चीजें स्किल हब प्रोग्राम्स में जो सीबीएसई की तरफ से लिस्ट आउट 21 जॉब रोल्स हैं, वो सारे रोल के लिए इंडस्ट्री लीडर की तरफ से इस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन के टाइम में बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप्स का भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्किल हब इनिशिएटिव। तो ये सब भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स बच्चों के साथ में रेगुलर क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर में ये सब भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, अब इसमें जो है वित्तीय डिजिटल साक्षरता अभियान में बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को आज के डेट में नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स कम्युनिटी ऑल्सो, पेरेंट्स को भी आज के डेट में इतने सारे बैंकिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, कॉइन्स एंड ऑल। सो ये सारे चीज का नॉलेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉप इंडस्ट्री के हेड्स की तरफ से अगर आपके बच्चों तक पहुंचती है तो वो बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इस प्रोग्राम में उनको एक डिजिटल कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिस कार्ड के हेल्प से वो उसको वो आईडी कार्ड की तरफ से यूज कर सकते हैं। कुछ स्कूल में अगर वो परचेस करना चाहते हैं, अगर पेरेंट उस पर रिचार्ज कर देते हैं तो वो कार्ड को काफी पर्सनलाइज करके यूज कर पाएंगे और काफी चीज में वो ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे उस कार्ड्स के हेल्प से, जिससे वो बचपन से ही डिजिटली लिटरेट हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी उनको नॉलेज मिल पाए। Same way, school and college connect. This is the major problem with many parents, many students, many schools कि बच्चे जब 11th and 12th पास आउट होते हैं तो क्या कैरियर ऑप्शंस उनके लिए बेस्ट, ये तो पहले सेट होता है, बट स्टिल बेस्ट काउंसलिंग के लिए ये प्रोग्राम में different we have tied up with the different colleges, we have tied up with the different universities, different boards। तो उनकी तरफ से क्या होगा कि एक काउंसलिंग किया जाएगा स्कूल में, जिसमें कि मल्टीपल करियर चॉइस करने के लिए आपको रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आप ये करियर चूज करते हो तो इसके लिए क्या लर्निंग पाथ है, स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि बच्चों को एक इजी कॉलेज चूज करने में, इजी करियर चूज करने में कोई दिक्कत ना आए। उनको पूरा प्रॉपर करियर गाइडेंस जो होता है, करियर कोचिंग जो होती है, वो स्कूल के इन्वायरमेंट के अंदर ही उनको मिल पाए। That's a part of the college connect. Then we talk about the art connect program यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट से मैप किया गया है सीबीएसई की तरफ से भी, और हम लोग भी चाहते हैं कि इंडिया का कल्चर, सभी बच्चे एक दूसरे का कल्चर को जाने और सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज कर पाए। तो जैसे क्या होता है कि अगर हरियाणा को मैप किया गया है तेलंगाना के साथ में और झारखंड को मैप किया गया है कर्नाटका के साथ में, तो ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के कल्चर, साइंस एंड सोशल साइंस प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें, आर्ट, म्यूजिक, डांस क्यूजाइन, ऑल दोस थिंग्स जो होते हैं उसके बारे में एक दूसरे के लिए प्रेजेंटेशन दें, क्लासरूम में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, ताकि बच्चे कल के डेट में अगर वो फ्यूचर में वर्कफोर्स के लिए रेडी होते हैं तो उनको कभी भी ट्रैवल करने में इन इंडिया और लोगों कल्चर जानने में, रिस्पेक्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। तो वो दे आर गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर एंड नॉट ओनली इन इंडिया, we are also trying to see that the G20 countries can also be part of this complete initiative. So right now in India, these states can collaborate, but in future we try to do with the country level. So ultimately this is again a 21st century. Virtual field trips काफी important initiative इस प्रोजेक्ट में, बच्चों को बिना वीजा एंड पासपोर्ट्स के डिफरेंट कंट्री टूर पे जा सकते हैं वो। और अगर टीचर क्लासरूम में आज पढ़ा रही है सोशल साइंस में कुछ सिविलाइजेशन के बारे में, और वो अगर मान के चलिए पिरामिड के बारे में पढ़ा रही है और उनको चाहिए कि कोई टीचर इजिप्ट से लाइव क्लास में आ जाए और बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर पाए, वो पॉसिबल है।
ठीक है, कोई गेस्ट लेक्चरर्स, कोई ऑथर आ जाए कोई बुक्स के, और बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास में आके ऑनलाइन बात कर ले, वो सब चीज पॉसिबल है। तो वर्चुअल ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि आप सिटिंग इन द क्लासरूम, यू वर्चुअली टेक ए टूर ऑफ द होल वर्ल्ड विदाउट हैविंग द वीजा एंड पासपोर्ट। सो बट इनफ नॉलेज लर्निंग्स विल हैपन। एंड ये लास्ट प्रोग्राम का जो ऑफरिंग है, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यू रखता है इंटायर प्रोग्राम्स का, बिकॉज हेल्थ इज एवरीथिंग। सो बच्चों के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, उसके लिए स्कूल्स में एक हेल्थ कियोस्क दिया जा रहा है जिसमें कि बच्चों के हेल्थ पैरामीटर्स रेगुलर मॉनिटर हो पाए। और नॉट ओनली दैट, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, काउंसलिंग ऑफ teachers, counseling of students, everything will be part of this health programs. तो ओवरऑल ये सारे प्रोग्राम को बंडल करके इन ए ईयर इस स्कूल को ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, जो जिसका बेनिफिट डायरेक्टली हमारे बच्चों को मिलेगा और हमारे पेरेंट्स कम्युनिटी को मिलेगा। तो इससे ये एक स्टेप है जिससे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन होने की काफी ज्यादा उम्मीद है। और कमिंग बैक टू सर। Thank you, Prashant. And well, all these line items that are shown to you on the screen are a byproduct of hybrid learning. Without hybrid learning, we couldn't have implemented any of these programs in the school. Then it would have been just a chalk and talk method. Industry couldn't have come to the school and thought. Neither the NPCI could have come to the school and thought about digital literacy program. And we are talking about a huge transformation, a huge amount of population being taught on different subjects, and which is only possible because of hybrid learning. Well, suppose you see hybrid learning. That is basically what automation of operation, digital teaching and learning platform. We are going to use a digital learning platform that it's coming from Microsoft. Then hybrid learning classroom infrastructure that we are giving to the school. That is, we are giving flat panel displays, from which the lectures will be delivered to the students. Plus, laptops are given to the students. Not laptops exactly; they are slates. Inside the lab, it is a higher end of the laptop wherein you have got handwriting recognition on the screen. Then you have got SIM slot where you got LTE connection. So all the time the students will have internet connectivity. Plus the students can write on the slate, so that whatever they write, it goes into the system. Plus it's got a keyboard like a laptop. All those things are there. Then we have got a digital pedagogy. That is, I told you about Gen Extramuros. It's got a digital pedagogy. Training. Who all we train? We train the teachers, we train the parents, and we train the students. That means all the stakeholders which are related to the school, we train. Then certification. Everybody gets certified. The teachers are getting certified, the parents are getting certified, and the students are getting certified. As we go along, we'll tell you on which the students, on what all the different what all the different certifications the students will be doing and what all the certification they'll be getting, but everybody gets certified. Then accreditation. Now this program is not just a simple program where we are just running by our own will and fancies and wills and wishes. It is also been monitored by QCI, that is Quality Council of India. So they are going to put certain parameters. According to those parameters, we have to run this particular program in the hybrid program in the classroom. Therefore, there is going to be authenticity while we run this particular program. Over to you, Prashant. अब हम लोग वन बाय वन ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हाइब्रिड लर्निंग क्लास 8 के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इस साल क्लास 8 के लिए प्रोग्राम दी जा रही है। और इस प्रोग्राम में बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, जैसा कि सर ने बताया अभी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की तरफ से जैसा निर्देश दिया जा रहा है, उस हिसाब से ये क्लासरूम्स को कंप्लीटली रेडी किया जा रहा है और उसी हिसाब से इनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अब क्लासरूम में अगर हाइब्रिड क्लासरूम हो रही है, तो उसके लिए इस प्रोग्राम में डिजिटल टूल्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट की तरफ से ही दिए जा रहे हैं। अब हाइब्रिड क्लासरूम को रन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल होती है।
पहली सॉफ्टवेयर, राइट सॉफ्टवेयर होनी काफी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड क्लासरूम के लिए। दूसरी राइट हार्डवेयर, हार्डवेयर होनी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है पेडागोजी के लिए, शिक्षा शास्त्र। सो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से हार्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो काफी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि हाइब्रिड लर्निंग को सपोर्ट करती है, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, लिसे कॉर्पोरेशन की तरफ से सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेशन को सपोर्ट करती है, बच्चों के रेगुलर प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है, उनके लर्निंग ट्रैक को सपोर्ट करती है, नॉलेज इंडेक्स को सपोर्ट करती है। ऐसे सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम में क्लासरूम 8 के लिए बनाए जा रहे हैं और उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्लास 8 के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। टीचर्स को भी, टीचर भी कहना है कि हाइब्रिड लर्निंग क्लासरूम के टीचर हैं, वो मेंटर हैं, प्रेजेंटर हैं। और हाइब्रिड लर्निंग के पेरेंट्स को भी सर्टिफिकेशन मिलना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आप ही लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हो बच्चों को कि दिस इज हाउ यू शुड, आपको इस तरह से इन्वायरमेंट रेडी करना है, चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, चाहे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर द वन जो कि ये सारी चीजों को ड्राइव करते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें हाइब्रिड लर्निंग क्लासरूम 8 के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि टीचर्स के लिए लैपटॉप्स, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप एंड प्रिंसिपल्स के लिए लैपटॉप, और क्लासरूम में एक काफी इंपॉर्टेंट एक डिवाइस दी जा रही है जिसके थ्रू, जिसमें कि विंडोज इनेबल्ड डिवाइस है, बड़े स्क्रीन का है, जिसमें कि जिसके थ्रू प्रेजेंटर्स ऑनलाइन क्लासरूम में आते हैं। और ये सारी सुविधा इस प्रोजेक्ट की तरफ से स्कूल को प्रोवाइड की जा रही है। नाउ गोइंग बैक टू आइस। Thank you, Prashant. Well, now we are going to Skill Hub Initiative. Now, Skill Hub Initiative is a very important program, very important program, because this is going to make the student understand how they're going to be, they're going to make the student job oriented. That is one. Point number two is they're going to make the student given, they will get a little exposure to the industry. In our case, what is happening today in the current school scenario is the student, unless they pass out colleges, they do not get any exposure towards the industry, what the industry really requires, how the industry looks, what is their structure of the industry, nothing maybe. It's only a book knowledge that all of us have got. But here what happens is, from 8th standard onwards, the industry is going to train the students on all the skills. We are going to, I'm going to show you the skills, the different skills that we're going to have here. And one skill a student can take. A skill can be beauty and wellness, or hotel management, or logistics, or IT and ITES services. So many skills are there, out of which the student can choose one skill and can take that skill and go along for the next 5 years and become proficient in that skill. And then when they come out of the 12th standard, they will be eligible for a job in that particular skill, because the industry has trained, they got trained in the industry, or they can go and pursue higher studies in that particular skill because they know about that skill, because the understanding of the skill is so deep, because the industry is going to come and teach them on a hybrid format. And next is, during the summer and winter holidays, we're going to have internship programs with the industry. So that is very important. And experts are going to come and teach the students from the industry. That means they're going to come and teach on a hybrid format from the industry. And all the students are going to understand, not from second hand, that is not from the teacher, but they're going to understand from the industry professionals. Over to you, Prashant. Yes. तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था आपको कि स्किल हब इनिशिएटिव ये काफी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क रखती है 21st सेंचुरी स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर में जागरूक करने के लिए। और ये कंप्लीटली इंस्पायर की गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर से, प्रोग्राम सीबीएसई की तरफ से लाई गई है, और जिसका शॉर्ट फॉर्म भी PMKVY का प्रोग्राम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू आया गया है। और इस प्रोग्राम के थ्रू जो हम ट्राई कर रहे हैं इस प्रोग्राम में स्कूली स्टूडेंट्स के लिए, कि वो राइट स्किल्स इंडस्ट्री से डायरेक्टली सीखें और
उसको अपना एक स्किल बना ले, जिससे कि वो 5 ईयर प्रैक्टिस करने के बाद, जैसा कि सर ने बताया कि क्लास 8 से वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 8, 9, 10th, 11th एंड 12th, definitely they will be ready for with one skill or two skills in their hand on a specific set. So then I will request sir also to share the next slide. In the next slide you will find out, आपको ये मालूम चलेगा कि जितने भी स्किल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे वो सारे के सारे स्किल्स इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और बच्चे अगर ये 5 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज करते हैं और चूज करते हैं तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर करियर के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. So now I'm giving the stage back to sir. Thank you, Prashant. Thank you very much. Now, digital literacy program. As Prashant and me spoke to you all about this digital literacy program, it's a very important program. Every child, every adult in this country should know about digital literacy. And here, the best part is we are going to teach them about digital literacy, about cybercrime, about cyber security, so many things in a digital literacy, and plus allow them to understand what are the different formats in which the digitalization is done in different industries. Then we also are going to, we are also going to give them a job-oriented kind of exposure in digital literacy program, and give them certificates from 3 very important organizations, or 4 very important organizations. This also has been conducted from 8th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Okay, so 5 classes. So we're going to give them certificates from NILET, which is from Government of India. Second is from Microsoft. Third is from Adobe for design and designing anything, and the students have the design talent in them. They know how to design certain things. It's a great way of having a career in that. And then we are also going to give them a certificate from Meta, that is for digital marketing and various kind of things. And then we are also going to give them overall certification from CBSE. Fine. So they're going to get a lot of certifications. So by getting the government certificate, they are eligible for government jobs. Okay. By getting the Microsoft certificate, can get jobs at any of the corporates or any of the private firms. By getting a certificate from Adobe, they can work in on the design, and they can work in any of the advertising agencies or design agencies or whatever it is. That's also going to be very helpful to them. So it is going to create a kind of a knowledge base in them, which they can go and look for future ready jobs. Because today the industrial jobs are coming down drastically, and today industries are becoming more and more automated. Now, for instance, as Prashant said, during the COVID, Mercedes-Benz and BMW deployed robos to have the entire manufacturing of their cars were done by robots. The entire manufacturing lines were controlled by robots. Now, once they have deployed robots, I don't think the human beings can go back and work in these assembly lines. So human beings have to find better jobs, or jobs that would make them more suitable for the knowledge age. That is the IT jobs or digital jobs. So that here the jobs are for, when you do this kind of a course, and when we teach this digital literacy program in the schools, the students will become future, knowledge age job ready. Over to you, Prashant. Yes, जैसे कि सर ने बताया है, अभी डिजिटल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है वो काफी इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में आप कैसे प्रैक्टिकली यूज कर पाते हो अपने सब्जेक्ट नॉलेज को डिजिटली, और एम्प्लॉयबल किस तरह से आप बन पाते हो, जिसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट सर्टिफिकेशंस
और चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर है आपको। जैसे कि इंडस्ट्री का नाम सर ने बताया, whether it is Microsoft or it is Meta or it is Adobe, there are a lot of things out there which is very very important for doing this entire thing. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि जब बच्चों को सिलेबस पढ़ाया जाएगी इसके ऊपर में, तो काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। जैसे कि आपका टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी, और फिर इंटरनेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और उसके अलावा अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या डिजिटल टूल्स है, क्या कैसे आप ईमेल लिटरेसी बन सकते हो, कैसे आप मीडिया लिटरेसी बन सकते हो, कैसे आप मीडिया लिटरेसी काफी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जैसे कंटेंट क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। और भी जैसे कि ऑनलाइन में काफी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, कैसे आप राइट इंफॉर्मेशन को आप एवेल्युएट कर पाते हो, क्योंकि काफी तरह की इंफॉर्मेशन होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रॉन्ग होते हैं। कैसे आप ये कर पाते हो कि कॉपीराइट्स क्या है, राइट इंफॉर्मेशन रॉन्ग, ये सर सारे फॉल अंडर आते हैं डिजिटल लिटरेसी टॉपिक्स के अंदर में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे हम छोटे से छोटी चीज को भी सीख के एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जा पाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप करके नेलेट का सर्टिफिकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कंप्लीटली फोकस करे, इंप्लीमेंट करे डिजिटल लिटरेसी को। बैक टू सर। Thank you, Prashant. Then financial digital literacy. As I mentioned earlier to you, financial digital literacy is very, very important. Now, what we do is we teach every single aspect of financial digital literacy. That is digital banking, digital insurance, then how to manage different cards, that is credit card, debit card, net banking, then UPIs, then different formats of how the payment gateways are attached to the websites. So many things are there. So all these things a student should understand, plus the security portion of it. It's very important, the frauds and the security and various kind of things. These are the things that the student should understand before getting into the world and before start using this entire thing. Then we also give a student something called a Bonami card. Bonami means a friend. Bonami card, wherein it's a prepaid card, a student can't misuse it. The student can use this card in the school for buying their tux or for paying their fees or whatever it is. Then it can also use as a ID card, can use as a access card, can use as a library card. Then can be used as an NCMC card. That is, today the government has started NCMC. That is, means it's a travel card. In any bus or any public transport, these cards could be acceptable. All right. I mean, the student doesn't have to carry cash to travel by these buses or trains or any other form of public transport. So that could be, these cards could be used there. Then, because the students start using these cards, and all the parents can see what exactly, where exactly these students are using this card, can monitor their entire expenses on this card. And then what will happen is, on this card there can be a small insurance, accidental insurance for this for the student. And we have got something called a family tree. That means if a card is used nicely, properly, then we allow the student and the family to come and plant a tree every year because of the usage of the card, so that they plant their own family tree. That means the environment also grows along with that, because digitalization means we are going green and we protect the environment. Over to you, Prashant. So जैसा कि आपने अभी सर की तरफ से सुना, ये जो प्रोग्राम है फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस पूरे ओवरऑल सेगमेंट के लिए, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें कि बच्चों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताया जाता है, उनको डिफरेंट तरह से कार्ड्स के बारे में बताया जाता है। अभी हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं, कार्ड्स में कितने लोग होते हैं, जैसे कि वीजा, मास्टर्स, एमएक्स, मल्टीपल कंपनीज होते हैं, उनका क्या काम होता है,
और फिर फाइनेंशियल को किस तरह से आप मैनेज करते हो, क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, और भी मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट यूपीआई है, इंडिया इज द ओनली कंट्री हु हैज गॉट द यूपीआई। तो ये सारे कंसेप्ट्स उनको पूरे एक्सप्लेन किए जाते हैं डॉट टू डॉट। और केवल थियोरिटिकल बातें इस प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि प्रोग्राम काफी पावर पैक प्रोग्राम्स है जिसमें कि बच्चों को एक नॉलेज तो काफी ज्यादा मिलता ही है, प्लस हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों को केवल नॉलेज मिले और उसको प्रैक्टिकल यूज ना कर पाए। उसके लिए बच्चों को इस प्रोग्राम की तरफ से एक एक बुनामी कार्ड दिया जा रहा है। बुनामी का वो बुनामी वर्ड जो है ये फ्रेंच से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है एक अच्छा दोस्त। तो बच्चों के लिए एक अच्छा दोस्त वो कार्ड का काम करता है, जिसमें कि वो मल्टीपर्पज कार्ड होता है, जिसमें कि बच्चे क्या कर सकते हैं कि स्कूल में अगर वो शॉपिंग करना चाहते हैं, कैंटीन में यूज करना चाहते हैं, वो यूज कर सकते हैं, कैंटीन में भी और टक शॉप पे यूज कर सकते हैं। वो चाहे तो उसको आईडी कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, आरएफआईडी कार्ड की यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी कार्ड की तरफ यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज वो कार्ड बच्चे के लिए यूज हो जाता है, और उसको कंप्लीटली मैनेज किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में कि हाउ कैन दे मैनेज द कार्ड्स, हाउ दे कैन टॉप अप द कार्ड्स फॉर देयर स्टूडेंट्स यूज, बच्चों को यूज करने के लिए कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे वो कार्ड को टॉप अप करवा सकते हैं। और ये कार्ड का एक बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये कार्ड अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं बाय 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 पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक बस और ट्रेन से या फिर मेट्रो से, दे ट्रैवल टू द स्कूल और समथिंग लाइक दैट, उस केस में भी दिस कार्ड इज ट्रीटेड एज ए एनसीएमसी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और ये कार्ड बच्चे यूज कर सकते हैं फॉर स्वाइपिंग इन देयर आल्सो। तो दैट इज आल्सो वेल कंप्लीटली दिस। एंड प्लस इस कार्ड्स पे एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि जिसका बेनिफिट बच्चे एंड पेरेंट्स को दोनों को होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि टू गो ग्रीन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल literacy. So after implementing this entire thing in the classroom or in the financial digital literacy program in the classroom, we are very sure that over a period of 5 years time, they know how to manage the finances. Now going back to sir. Thank you, Prashant. The next is School and College Connect. I think this is a very important part for the future of the students, because if they do not know what is available in terms of courses, they always get a little panicky and they get into wrong kind of coachings, they get into wrong kind of advices, and then agents come into the picture. There's so many things. So there are good colleges in India and abroad, and they want to come and counsel the students directly and talk to the students and what are the different innovative courses they have brought in. And today, after NEP 2020, there's multidisciplinary courses. You don't have to do engineering separately. You don't have to do accounting separately. You don't have to do law separately. Everything can be combined together. So there are a lot of good combination of courses that could be done by the student, and be happy and be a professional and become a professional in the future, and have a very good employment. Therefore, this kind of a relationship between a college and a school is very important. What we are doing is we are trying to bring in at least 4 colleges a week to talk to the schools. So we have 30 weeks in a year, maybe, where schools are open, and all all in this weeks, the colleges can come and counsel the students, can also counsel the parents. The parents also can listen to what the colleges have to say. Then after doing a 30-week round, then the students can decide which college they want to belong, college they want to study in, and what's a good course for them, and then they can prepare for it and go and take a plunge into the higher studies. Over to you, Prashant. Yes, जैसा कि सर ने बताया अभी जस्ट आपको, कॉलेज कनेक्ट पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर लीड करता है, जैसे कि बच्चों को किस करियर में अपना फ्यूचर लीड करना है। और जैसा कि सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई आज कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से प्रेरणा लेके ही हायर एजुकेशन भी ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली हो गई है। जैसे हायर एजुकेशन 12th के बाद में बच्चों को जो कॉलेजेस में वो जाएंगे,
फ्यूचर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से आने के बाद दे विल गो टू द मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज। आज के डेट में मैक्सिमम कॉलेज ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स के मल्टीपल स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके कंबाइंड डिग्रीज बच्चे अपने चॉइस से सब्जेक्ट लेके कंबाइंड डिग्रीज यूज कर सकते हैं। और इसका काफी ज्यादा एडवांटेज होता है हमारे स्टूडेंट्स पे कि चूजिंग द राइट फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल सिविल इंजीनियर्स, उनका एक सब्जेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट था। दे ओनली नो अबाउट कंस्ट्रक्शंस, दे नो अबाउट द कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स, ये सब पता होता था। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए या फिर उस ब्रिज को बनाने के लिए वहां के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका स्टडी उनके पास में, उनके नॉलेज में नहीं होती थी। लेकिन आज जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंडिया जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के लिए, तो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी साथ में कंबाइन करके, ताकि जो स्टूडेंट्स प्राइमरीली जो ब्रिजेस बना रहे हैं उनको ये पूरा इन्वायरमेंट का भी नॉलेज हो, और ताकि कंप्लीटली इंडिया प्रोग्रेस कर सके। तो ये सब चीजें जो बच्चों को एक प्रॉपर वे में जब काउंसलिंग कॉलेज करते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज काउंसलिंग करते हैं, ये उनको एक राइट वे में गाइडेंस, करियर गाइडेंस के लिए काफी हेल्प होती है। और सर ने बताया कि कॉलेजेस की तरफ से स्कूल्स में जब जब नेसेसरी टाइम फ्रेज पे एक ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि ये सारी चीजें बच्चों को बताया जाएगा, जिससे कि उनका माइंड मैप काफी अच्छे से हो जाएगा। और उस सेशंस में पेरेंट्स का भी रहना काफी इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर इनिशिएटिव। नाउ गोइंग बैक टू सर। Next is Art Connect. Art Connect is very important because Ek Bharat Shresh Bharat is a very important program, because every child should know the culture of the country. Now, the people who are living in a particular town or a city, they would know around them what's happening, but they will not know the entire country. Maybe the people from the south, they might not know what's happening in the north, or people from the north might not be happening what's happening in the east. Therefore, this particular program is brought in so that the students can collaborate and demonstrate the culture, art, language, cuisine, festivals, folklores, and tourist attractions to the other students on the other side. Like Prashant told a little earlier, that a Karnataka student can combine with a student from Jharkhand. Now, from Jharkhand, the students, they can talk about their culture, art, language, cuisine, festivals, folklores, and the students from Karnataka can talk. So what happens is there's a mutual appreciation which develops between two regions, and the students comes to know a lot. So therefore, this program is very important. And without hybrid learning, this particular program might not be possible for students to collaborate with each other. Over to you, Prashant. Yes, and yes, I also agree with this entire thing. This particular programs is also very, very important for the digital transformation is in a school, as well as 21st century skills development in the students. What is basically happening is, क्या होता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं और जब स्कूल से वो पास आउट होके कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज से पास आउट होके जब वो जॉब प्लेस में जाते हैं, और जब उनका जॉब में वो उनको काम करना पड़ता है। बेसिकली अगर आप एग्जांपल देख के चलो कि उनको काम ये करना पड़ रहा है कि उनको एक डिफरेंट पर्सन से बात करना पड़ता है जिसके लैंग्वेज डिफरेंट। अब इंडिया में एवरी स्टेट हैज गॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो क्या होता है कि जब बच्चे को स्कूल के टाइम से ही ऐसे प्रोग्राम्स में जोड़ा जाता है, तो वो क्या होता है कि उनको धीरे धीरे 5 साल तक में वो सारे ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में डिटेल नॉलेज वो प्राप्त कर पाएंगे, और उनके कल्चर के बारे में। और जो मेन एम्फेसाइज किया गया है इसमें, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड किया गया है। इट इज नॉट ऑन जस्ट लाइक कि आपने ज्वाइन किया बच्चों को और दे शुड नो अबाउट कि आपके यहाँ क्या म्यूजिक है, क्या। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मेन इंपॉर्टेंट एरिया हेयर इज द सब्जेक्ट एनरिचमेंट, सब्जेक्ट को समृद्ध करना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका का ज्योग्राफी कंप्लीटली डिफरेंट है, और
सेम सब्जेक्ट में अगर वो झारखंड में ज्योग्राफी है तो वहां का डिफरेंट कंप्लीटली ज्योग्राफी है। तो जब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीचर इस तरह से कस्टमाइज करके प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो एक दूसरे को के कंसेप्ट को, साइंस और डिफरेंट आर्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को एक दूसरे से जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट इज नॉट द फन, नॉट ओनली जस्ट अ फन, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द डेप्थ लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। और ये करने से डेफिनेटली कल के डेट में जब वो वर्क प्लेस के लिए रेडी होते हैं तब उनको कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग भी जॉब करते हैं, हमारे साथ पे जो लोग काम करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, तो हम लोग को ये स्किल काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करें, क्या क्या चीज उनका रिस्पेक्ट करें, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें स्कूल में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिस विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। ओवर टू यू सर। Thank you, Prashant. Now, virtual field trips. Now, virtual field trips is very, very important because it gives a lot. I mean, when the student is sitting in the classroom, but still they can visit different organizations, different places, and understand. And it's an experiential form of experiential learning, and they can understand from the experts who are there in that place. For instance, now let's say many students might not be able to climb Mount Everest, but if there's a climber who's going up the up Mount Everest, but he can explain to the children what are the do's and don'ts to become first of all a mountaineer, and second is how to climb Mount Everest. So the student can get interested and see what all the I mean, otherwise what we are getting is a second-hand knowledge from the TV channel or from YouTube or whatever it is. But here what happens is it's a first-hand knowledge. You're getting it directly from the person who's there on the field and who's an expert, basically. So experiential learning, nothing can substitute experiential learning, because you can't get many people inside the gate of the school to explain to the students their experiences, because they do not have the time. They're all professionals. They're doing the job. But if the students can go to their locations virtually and understand what is happening in their places, it'll be a fantastic opportunity for the children to understand and then decide whether they want to follow that profession or they want to go to that place, and what is their aims and what they want. I mean, that it'll shape their future basically. Over to you, Prashant. Yes, जैसे कि सर ने भी बात की है वर्चुअल फील्ड ट्रिप की, ये अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, और जैसे कि एग्जांपल हम लोग, और ये प्रोग्राम भी कंप्लीटली क्लासरूम से कनेक्टेड है। अब ये भी अब कंप्लीटली द लेसन से कनेक्टेड है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टॉपिक हो गया वाटर पोल्यूशन का टॉपिक चल रहा है क्लासरूम में, और वाटर पोल्यूशन के बारे में टीचर क्लासरूम में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एक्सप्लेन करते करते टीचर को ये हुआ कि चलो क्यों नहीं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दिखा दे बच्चों को। तो टीचर एक क्लासरूम में एक वीडियो एक्सप्लेन कर सकती है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, कैसे होता है, बट बच्चों के दिमाग में काफी सारे डाउट्स होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, और वो सब डाउट्स में भी उस समय टीचर्स के पास में आंसर ना होता हो, चाहे वो वीडियो में आंसर ना मिलता हो। तो उस समय क्या होता है कि जब टीचर ने वेल प्लान किया हुआ है हाइब्रिड क्लासरूम ऐसा होता है कि वेल प्लान क्लासरूम होता है, और इस क्लासरूम में अगर ये प्लानिंग हो चुका है कि हाँ इस दिन एक वर्चुअल ट्रिप होना है, तो उस दिन कोई डीप सी अंडर वाटर मैरिन बायोलॉजिस्ट को स्कूल कनेक्ट कर सकता है, और उस समय रियल टाइम बच्चे अपने डाउट्स उनसे रियल टाइम पूछ सकते हैं, जो कि उस समय अंडर वाटर में हो, और वो पूरी की तरह सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि रिसेंटली मैंने देखा एक स्कूल में, वहां पे पूरे क्लास के बच्चे इंग्लिश के टीचर के लेक्चर ले रहे थे, और उस समय टीचर ने वेल प्लान किया हुआ था कि उस दिन उनको सरप्राइज देना था कि चलो आज मैं आपको एक ऑथर के पास लेके जाती हूँ जो कि इंडिया के नहीं है, इंग्लैंड के। तो उनसे हम लोग जानते हैं कि कैसे ऑथर बनते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि पूरे क्लास के बच्चों को प्लान्ड वे में, सरप्राइज वे में उस क्लासरूम में उस ऑथर से रियल टाइम में कनेक्ट किया गया, जिसमें कि ऑथर ने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि मैं किस तरह ऑथर बना इंग्लिश के हेल्प से, और
जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह आप भी ऑथर बन सकते हो, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और कैसे आप एम्प्लॉयबल हो सकते हो ऑथर बनने के साथ साथ। तो जब वो गाइडेंस किए, उस स्कूल के सारे बच्चे उसको फॉलो किए और आज की डेट में उस स्कूल के बच्चों का बुक्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और वो सभी के सभी क्लासरूम के बच्चे ने ऑथर ऑथर एक्चुअली बन गए। नॉट ओनली जस्ट कि लर्निंग एंड नोट्स मेकिंग हुआ, ऑथर बन गए। तो वर्चुअल ट्रिप से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के लिए, और हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए हर जगह पे वर्चुअल ट्रिप राइट वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी। गोइंग बैक टू सर। Thank you, Prashant. Now, health program. Now, one of the most important programs is health program because there are two things. One is we don't know why our children are not learning. Maybe they have got certain health deficiencies, which we need to know, but we try to ignore that and we try to taunt the students saying that you're not a good learner, you're not studying well, things like that. But only a student knows what they're going through internally. Therefore, what we do is we give a health kiosk wherein there are 69 parameters of the student can be assessed. And once the 69 parameters of the students are assessed, then any deficiencies are there, it will come out and will be given to the parents, and the parents can take immediate action about going to a doctor or buying them some kind of supplements so that the child can become healthy. That is one. Point number two is mental health. Now, we in India, about everything is very hush-hush about the mental health. Now, a lot of students are getting abused or are having a mental problem, but they're not able to confide to anybody. Here, what we do is we give a kiosk, a counseling kiosk, wherein a student can get connected to a professional, a psychologist, and they can talk to a psychologist about what they feel and what they are feeling and things like that, because it's very important for the students to confide or to confirm what they are feeling, because it's very important in a child's life that they come out and speak. Anonymity is very important. Sometimes anonymity is very important because they're not able to speak to their parents or teachers or to their friends or whatever it is. Some people are introverted, so it's better that they go and speak to a professional. Or not only the introverted people, even the extroverted people can go speak to a professional. Then we also have got something called an infirmary. We are setting up infirmaries in various institutions. Therefore, the first aid could be given by the trained nurse, and the students can I mean, whenever they are hurt or whenever they have a problem, this nurse takes care of the children. Therefore, the health program is 360 degrees, and plus the lectures are conducted on adolescents health program. Therefore, the students know the do's and don'ts of life and how they should manage their future, and basic thing like from nutrition to how to live a life, they do understand because of this particular program. Over to you, Prashant. Yes. So this particular program is again a very important and it sums up the entire deliverables, और ये completely ऐसा प्रोग्राम है जो कि सारे प्रोग्राम को आपस में जोड़ के रखता है। बिकॉज आप सारे प्रोग्राम हम डिलीवर करेंगे, बट बच्चों के मन में क्या चल रहा है, कैसे वो अपने करियर के प्रति आगे बढ़े, कैसे वो एम्प्लॉयबिलिटी के प्रति, और कैसा डाउट्स उनके दिमाग में, ये सारे चीज को एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम साथ में लाया गया है, जिसमें एक स्कूल को एक हेल्थ का एक कियोस्क दिया जाएगा जो कि एक कंप्लीटली काइंड ऑफ रोबोट्स है। बच्चों को वहां पे उनका हेल्थ ट्रीटमेंट्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल, उनको अपना स्कूल्स में नॉर्मली एक स्मॉल माइनर वो कहीं गिर जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है या फिर कभी फीवर हो जाता है उनको, तो उनका हेल्थ को मॉनिटर करना काफी इंपॉर्टेंट है। वो भी पार्ट इस कियोस्क के हेल्प से हो जाता है, ताकि राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचे। नॉट ओनली दैट, कि बच्चों को जिस तरह से सर ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ में काउंसलिंग्स, ऑल दोस थिंग्स इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कंप्लीट प्रोग्राम। और
हेल्थ प्रोग्राम में जब बच्चों को जब ऑनलाइन लेक्चर जो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम का लेक्चर दिया जाता है, तो इट इज मेनली टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों को बताया जाता है कि न्यूट्रिशन पे कैसे किस तरह ध्यान दें, और पेरेंट्स को भी काउंसलिंग्स में पार्ट किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है इस ऑनलाइन लेक्चर्स में किस तरह न्यूट्रिशन आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है हेल्दी माइंड के लिए, और नॉट ओनली न्यूट्रिशन, लाइफ साइंस के लिए भी। तो ये सब पार्ट में रियल टाइम लेक्चर्स एक्सपर्ट्स करते हैं, जिससे कि बच्चे हमेशा मेंटली फिट होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है ये पूरे प्रोग्राम के डिलीवरी सक्सेसफुल होने के। गोइंग बैक टू सर। Thank you, Prashant. Now, as we have seen, the key initiatives of Carte Blanche, we have already said what they are. We just explained the whole thing to you. The goals has been transformation from industrial age to knowledge age, because it's very important, because we have to move and we are in a transition period right now. Therefore, it is faster we move, the better it is. Then the students will have access to advanced technologies like cloud computing, AI, mixed reality, and M365. All right. So see, the mixed reality and things like that is going to be explained in the classroom. Now that doesn't happen on a day-to-day basis in a normal school. So, and cloud computing and things like that. So as we go along, I don't want to dwell too much on this because these are all higher concepts. And as we go along, maybe in some other session, we'll explain more deep into these kind of things. Then hybrid learning allows you to personalize and personalization of education from anywhere, any place, on any device. And this makes institutions more resilient during the challenging times that we have seen it, basically, because when the COVID came, the three most robust industries got closed down. Okay, the schools got closed down, the hospitality industry got closed down, and hospitals also got closed. So at that point of time, we know that if the problem comes, we need to be lockdown proof. Therefore, hybrid learning does that. Then of course, Project Carte Blanche approaches the social schooling. See, basically in Project Carte Blanche, it is social schooling. That means what we do is we do not take the money from the parents, we do not take the money from the school, we do not take the money from the government, but we take the money from industry because we are creating the workforce of tomorrow. Over to you, Prashant. Yes. So अगर मैं सारांश पे आता हूँ तो सारांश में ये है कि टेक अवंगार्ड माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट कार्ट ब्लांच आपके लिए लेके आई है, जिसका मेन उद्देश्य है कि 800 से अधिक स्कूलों को ये सुविधा प्रोवाइड की जाए। अब ये 800 से अधिक स्कूल्स इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्कूल को ये बेनिफिट दिए जा रही है, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को सिलेक्ट किया गया है और उस स्कूल में ये सारे डिलीवरेबल्स जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में आपको बताया गया है, ये सारे साइड आइटम्स, हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल साक्षरता, स्किल हब इनिशिएटिव, ये सारी चीजें उस स्कूलों में प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, और ये आने वाले 5 साल तक ये चीजें लगातार बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो 21st सेंचुरी के लिए रेडी हो जाए। और कंप्लीटली इसका जो मेन गोल है वो बताया जाता है कि औद्योगिक युग से किस तरह से ज्ञान युग की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये कंप्लीटली प्रोजेक्ट को लाया गया है। और छात्रों के पास, जितने भी छात्र हैं उनके पास में क्लाउड कंप्यूटिंग, मिक्स्ड रियलिटीज के टूल्स, M365 सॉफ्टवेयर जो कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब जो सॉफ्टवेयर आपके स्टूडेंट के पास में आज रहेंगे वो सबसे लेटेस्ट रहेंगे। जो टेक्नोलॉजी आपके बच्चों के पास में आज रहेगी वो सबसे लेटेस्ट रहेगी, चाहे वो ओवरऑल वर्ल्ड की आप कंपैरिजन कर लें, फिर भी आप हमेशा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहोगे। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और हाइब्रिड लर्निंग का सबसे बड़ा स्कोप है जिसमें कि आपको लर्निंग बच्चे कहीं से भी किसी भी समय किसी भी डिवाइस पे वो लर्निंग कर सकते हैं, और ये काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम बन जाता है। और इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि
लर्निंग नेवर स्टॉप्स, मतलब हमेशा लर्निंग हमेशा होता रहेगा बच्चों के लिए। और ये सोशल स्कूलिंग का कंसेप्ट से ये प्रोवाइड किए गए, ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें कि सोसाइटी की हेल्प से ये पूरे के पूरे डिलीवरेबल्स बच्चों तक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम लोग समाज में एक काफी अच्छे जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकें। और शिक्षा में कम्प्लीटली 4 मिलियन से अधिक इस प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली लाभ का डायरेक्ट फायदा उनको पहुंच सके। तो ये सब कम्प्लीटली एक सारांश है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपके स्कूल को वन डिस्ट्रिक्ट के इकलौते स्कूल को सिलेक्ट किया गया है जिसमें कि ये प्रोजेक्ट है, एंड आप उनके पहले पेरेंट हो, आप उनके पहले मैनेजमेंट हो, आप उनके पहले टीचर हो, आप उनके पहले स्टूडेंट्स। सो दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। गोइंग बैक टू से Thank you, Prashant. Well, we just, as Prashant said, we have got 800 plus schools, 1,500 students in these schools, 100 and more than 100 teachers, 3,000 more than 3,000 parents, and 4 million. Overall, the 4 million population has been empowered because of this particular project. Therefore, we want you all to be serious about this particular project, because you're the first citizens who have got a chance to be a part of this particular project. And there's only one school per district across the country. And you're the chosen school, you're the chosen, your children are chosen for this, your students are, your boards are chosen for this, and you're the chosen parent. And please do not waste this opportunity. Make use of this opportunity completely so that we can make India great. Because why I tell we can make India great is, see, when the Gurukul system was there, the Indians, Chinese, and the Arabs were way ahead of the world, because they had invented the philosophical system or the Gurukul system, and that was the most modern education system. Then when the four walls of the classroom came in, the Westerners took over. Now we have got a good chance that we are going to implement this hybrid learning, NEP 2020, connected learning community, which is the learning system of the knowledge age. And supposing we implement this, we being the largest and the youngest country in the world, for next 1,000 years will be the most progressive society of the world. Over to you, Prashant. और डेफिनेटली मैं सर के बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इंडिया एक सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए आगे बढ़ रहा है। और आपके सामने जो डेटा दिख रहा है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला डेटा है। जैसे कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि 800 से अधिक स्कूल जिलों में ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसमें कि हर जिले में 1500 से अधिक बच्चों को इस प्रोजेक्ट से सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे कि वो सारे स्किल्स सीख पा रहे हैं। नॉट ओनली जो मैंने प्रोग्राम्स में बताया, हाइब्रिड लर्निंग करिकुलम के अंदर में भी काफी सारी चीजें जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं इस शॉर्ट मीटिंग में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो लेटेस्ट कोडिंग स्किल्स भी अगर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड चाहिए, वो सारे स्किल्स, सारे प्रोजेक्ट, सारे सॉफ्टवेयर, माइनक्राफ्ट, सारे कुछ उनको मिल जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो लेकिन सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं मेंटली इस प्रोजेक्ट में, और 100 से ज्यादा टीचर हर कंप्लीटली जिले में रेडी हो रहे हैं। और पेरेंट्स को भी इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ये प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट फैलाव है वो 40 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है हर साल, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें, तो ये क्लास 8 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, और जिस तरह बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली इसका स्प्रेड काफी बड़ा हो जाएगा और इंडिया एक काफी आगे, बिकॉज जो वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है 2030 में एक कंप्लीट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और जॉब के सेगमेंट में भी, जहां भी कंपनी में, जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो रिटेल, बैंक, किसी भी इंडस्ट्री में, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। ऐसे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं जो अभी है ही नहीं मार्केट में।
लेकिन अगर हम आज से ही, ये राइट टाइम है, अगर आज से ही बच्चों को इस प्रोजेक्ट के थ्रू बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दें, उनको उनका बाउंड्रीज ओपन कर दें, डेफिनेटली बाय 2030 हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी कम्युनिटी डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, और ये सब आगे बढ़ते बढ़ते डेफिनेटली हमारा इंडिया भी आगे बढ़ेगा. दैट्स अ मेन थिंग ऑफ द एंटायर इंटेंट ऑफ दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट, एंड उसी के हेल्प से एक भारत समृद्ध भारत हो जाएगा. नाउ गिविंग द स्टेज बैक टू Anis. Thank you very much, Prashant. Over to Shivangani. Thank you, sir. I call Thank you, Shivangani. A very good evening to everyone gathered here. I would like to start by quoting Eleanor Roosevelt, and I quote, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." The Carte Blanche commitment is, with a clear vision, schools can integrate technology available today to start becoming dynamic centers of learning that combine the best of traditional education with unique approaches and innovative thinking and learning tools. Project Carte Blanche will help schools build connected learning community through our investment in research and development, new technologies, innovative platform architecture, a wide range of solutions from web services to networking to productive tools, and our education programs and partnerships. Through products, programs, and partnerships, we are committed to help educators use technology to build a modern learning infrastructure, provide anytime, anyplace access to learning, and integrate technology into all aspects of the classroom learning and school administration. When we first introduced the connected learning community concept, we had a vision of schools creating enriched learning environments by being connected to each other and to the internet. The vision is fast becoming a global reality as school systems and entire nations make commitments to provide every student and teacher with access to computers and to information online. This is an exciting time. The central question is no longer should technology be in education, but how can technology be used to help students achieve their goals? Today, new hardware devices, powerful software, and an explosion in web-based devices and services are poised to empower the next generation of learners. Schools will be able to put technology directly into the hands of students and provide access to learning anytime and any place. New tools will enable educators to customize learning and continuously improve their schools. Parents will have a renewed role in education as they will be able to review their children's schoolwork and connect with their teachers more easily. The barriers to implementing technology in schools are not insignificant. We must make a collective commitment to ensure that no student is left behind and that no teacher feels unprepared to teach in a modern classroom. But the potential rewards for our children and their future are so great that we must work together to understand how to overcome these challenges. This community is designed to share what we have learned about how technology is revolutionizing education and to explore the technologies that hold the most promise in education. We hope to spark an ongoing dialogue that will make learning more widely available to all. We thank you for attending this parent orientation session. You with us can form one world, one community. Thank you.